हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वी आर लाइव राइट नाउ, सो वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्यूटी लर्निंग. ओके, so today we are going to study and start a new chapter today, and the chapter is basically going to be integrals. Okay, so this is the part 1 of the starting series for the chapter of integrals. Okay, and I will be the instructor for this particular course as well. Okay, so before we start, अगेन एंड अगेन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस. ओके, एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट सेइंग दैट जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, स्पेशली फॉर जेई मेंस या फिर जेई एडवांस, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग मेंस एडवांस, अलॉन्ग विद दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिस पे आपका क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस यूज होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक दैट यू नीड टू फॉलो एंड मस्ट हैव इज एनसीईआरटी. ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी का फिजिकल टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोशिश करो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने का, विच इज इजीली अवेलेबल. ओके, एज वेल एज have your NCERT exemplar textbook as well. Okay, so ये दोनों किताब आपके पास होना ही चाहिए. Okay, okay, so if you are currently in class 11 or in class 12 and if you are preparing for the upcoming JEE mains and advanced examination, और आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन में कोई जगह में प्रॉब्लम आ रहा है, आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, फिर अगर लगता है कि नहीं मेरा से जो जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली यू आर इन द राइट प्लेटफॉर्म एंड आई एम गोइंग टू गाइड यू अलॉन्ग विथ एवरी पार्ट ऑफ द जर्नी. ठीक है, तो अगर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रल्स, और इंटीग्रल्स के काफ़ी सारा पार्ट्स होने वाले हैं. ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ठीक है, और एक बार बेल आइकन को दबा दो ताकि तुम्हें पता चले कि जो नोटिफिकेशन आते रहेगा ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्लास कब स्टार्ट हो रहा है, क्लास कब एंड हो रहा है. राइट, तो एक बार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो हम क्लासेस लाइव भी अटेंड कर सकते हैं. ओके, और अगर मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना हो कि क्लासेस में ये पर्टिकुलर चीज़ में समझ में नहीं आया, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते समझ में नहीं आया, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क दैट आप इन द लाइव चैट एज वेल. ठीक है, तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग और अटेंडिंग द क्लास लाइव. ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास. एंड बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे. कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ हम शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, मेरे एंड से. एंड विद दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, हाउ शुड गो अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन सी अप इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो आप अगर क्लास 11th और 12th में हो, अगर आप जेई के लिए सीरियस एस्पिरेंट हो, डेफिनेटली दिस लेक्चर्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. इस लेक्चर्स को अपने दोस्त के साथ भी शेयर करो. ठीक है, उन दोस्तों को भी शेयर करके भेजो कि जो लोग बेसिकली इस लेक्चर्स को देखना चाहते हैं. ओके, एंड डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, रिलेटिव फ्रेंड्स, जिनको लगता है कि इस पर्टिकुलर लेक्चर से उनका हेल्प हो सकता है. ओके, दिस ऑल सेशंस आर जस्ट फॉर फ्री ऑन यूट्यूब एंड एनीवन कैन वॉच दिस लेक्चर्स. ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन. बिफोर आई स्टार्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट to all of you is that we have already started our live online batches. Okay, we have already started our live online batches. Please contact us on this particular number to get enrolled in this particular batches. Okay, the number is written over here. If you want to contact me and my team and you want to get personalized doubt clearance, classes, content, one-on-one teaching, okay, you can always contact us on this particular number. अगर आपको contact नहीं करना, if you want to WhatsApp, you can also just write a WhatsApp message. Hi, I want to enroll for this live classes. Can you send me the schedule? That's it. Okay, तो एक बार आपको क्लासेस के बारे में जानना है कि क्लासेस कैसे होंगे, क्लासेस का स्ट्रक्चर्स कैसे होगा, क्लासेस कैसे कैसे लिया जाएगा एंड किस माध्यम से लिया जाएगा, आपको टेस्ट कैसे दिया जाएगा, मॉक टेस्ट कैसे होगा, ऑल द थिंग्स विल बी प्रीटी क्लियर ऑफ विद दिस पर्टिकुलर बैचेस. ओके, सो अगर आपको बैच के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो जानना है, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. ठीक है, एंड द बैचेस प्राइसेस इज स्टार्टिंग जस्ट एट ₹999. ओके, मंथली ₹999 पे आप पढ़ सकते हो. ओके, तो इसी के साथ शुरू करते हैं क्लासेस. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रल. ठीक है, तो इंटीग्रल सुन के सबके अंदर तो डर डर लगने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि इंटीग्रल तो बहुत काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ होने वाला है. तो आज की क्लास में मेरा कोशिश यही होगा कि इंटीग्रल्स को जितना से जितना संभव हो सकता है मैं उसको ईजी करके ब्रेक डाउन करके आपको चैप्टर को समझाने की कोशिश करूंगा. एंड विद दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉट्स एंड लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जेई मेंस, जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई डिफिकल्टी ना आए. एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक योर इंटीग्रल्स द फेवरेट चैप्टर ऑफ ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो अगर आप मेरे से इस पर्टिकुलर चैप्टर को अभी तक पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, या फिर अपनी इंटीग्रल्स कभी छुए भी नहीं हो, डेफिनेटली स्टे ट्यून फॉर दिस लेक्चर. अब एक बार पढ़ने के बाद डेफिनेटली फील करोगे कि ओके, इंटीग्रल्स इज नाउ माय फेवरेट टॉपिक. अब मुझे इंटीग्रल्स पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ठीक है,
तो शुरू करते हैं इंटीग्रल्स। ना बिफोर स्टार्ट इंटीग्रल्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने लिए है ऑलरेडी, लाइक ऑन कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशंस, ओके, लिमिट्स, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे जो कैलकुलस का जो पोर्शन है वो बेसिकली काइंड ऑफ वेरी मच रिलेटेड टू द प्रीवियस चैप्टर्स। तो जो मैंने जैसे चैप्टर्स में जैसे ऑर्डर में पढ़ा है ना, इस पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको पढ़ना है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे हम चैप्टर्स पे गो थ्रू करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, पर्पस के लिए, राइट। सो वी स्टार्टेड विद द फंक्शंस, राइट। तो अभी तक हम जो कैलकुलस में पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज बेसिकली ऑल आर वन वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। आपके पास एक वेरिएबल होगा जिसको वेरी कर रहे हो, और उसके वेरी करने के जो फंक्शन का जो वेरिएट है, दैट इज एक्स, इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी कर रहे हो, एंड उसके बेसिस पे जो आउटपुट आ रहा है, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू एनालाइज, ठीक है। एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड इज फंक्शन, राइट। सिंपल सा बात में ऐसे बोल सकते हैं, राइट। So we started our journey with discussing about any particular function, right? And then we tried to understand कि इस function का values हर जगह में कैसे निकाल सकते हो। मान लो किसी particular location में function defined नहीं है, तो भी हम value कैसे निकाल लेंगे? That is something what we learned in the chapter of limit, right? After learning about limit, we discussed about two important things, that is continuity, right? That is continuity and differentiability, right? So we discussed about two things, that is continuity and differentiability. Right. So these are the very important things that you need to understand when you are discussing about functions, right? So continuity क्या होता है और differentiability क्या होता है? Continuity basically means that if you are able to draw the graph of the function without even lifting the pen, that is basically defined as continuity or continuous functions. Whereas differentiability is the ability of the function by which you can differentiate or find the slope of the tangent at any point on the curve. Okay. So if you need to understand what is continuity, differentiability, you can definitely watch our previous sessions on continuity and differentiability. But in today's session, I'm going to use those concepts and I will try to build the theory of the integrals on this particular topic as well. Now, before we start the integrals thing, another very important thing, integrals are generally called as antiderivative or primitive, right? That is the most important thing that you need to understand. And why do we need integrals? That's also a very important question, right? So simple say question का एक solution basically, that is, if you recall the history, okay, if you recall the invention of calculus, it is all dated to the inventor, that is Sir Isaac Newton, who basically started the foundation of calculus, right. So generally when he was starting calculus, what his primary goal was basically to find out the rate of change of any quantity with respect to any particular independent quantity, like for example time or rate of change with position. So that was his primary motto, right. जब वो बेसिकली उस पर्टिकुलर चीज पे बात कर रहा था, देन ही केम अक्रॉस विद एन आइडिया दैट व्हाट इफ आई टेन दैट चेंज इन independent variable to a very small quantity, and what if I understand that what will be the feature of that particular small change with small respect to the change in the independent variable, and that is what was defined as derivative, right. So न्यूटन ने जब स्टार्ट किया था डिफरेंट कैलकुलस इन्वेंट करने का ना, तो बेसिकली ही स्टार्टेड विद द डिफरेंशियल कैलकुलस. सो इफ यू हैव एनी कर्व, arbitrary curve at any point of the curve, if I need to know that what is my rate of change, okay, so what he did, he took 2 points on the curve. Let's say the 2 points are A and B, and then this particular change in the y coordinate with respect to the change in the x coordinate, right. So this was, so delta y upon delta x is defined as a slope of the chord, right, is defined as a slope of the chord, right. So it is defined as a slope of the chord. Now what he tried to understand, what if he tends this particular B towards A, and that's what we have discussed, and we have defined that particular quantity of the quantity when the delta x tends towards 0, that is the quantity that we defined as derivative, right. That is a quantity which is defined as the slope of the tangent. So that was the invention of the differential calculus, right. But there was another mathematician named, okay, who started working upon a different thing, and his main primary goal was to find out that what if I need to find out what is the area that is enclosed in between two points. Okay, let's say I have 2 points, okay, and let us take these 2 points only, A and B, and my primary goal, मेरा जो primary goal है, that is basically to find out that what is the area that is bounded by this curve with respect to the x axis, ठीक है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि what is my area that is bounded by this curve within the y axis, ठीक है. अगर मान लो मुझे इन दोनों एरिया के बारे में कमेंट करना पड़े, then how am I going to do that? So that was the main primary question that was asked
by one of the mathematician who started to discuss about the integral calculus, and he also started in this way ताकि उसने integral calculus का भी invention किया था, and he was none other than Leibniz. Okay, so and then Newton is also given credited for invention of calculus, so because he defined the differential calculus. But मेन चीज ये था कि दोनों ने सेम चीज पे काम किया था, एंड डेफिनेटली दे one started with the integral calculus and one started with the differential calculus. So that is about the history. Okay, काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि दोनों एक ही चीज पे काम कर रहे थे, एंड डेफिनेटली दे वर स्टार्टेड विद अ डिफरेंट पाथ. ठीक है. Okay, so but the end goal was the same thing. Okay, so what was Leibniz's goal? Leibniz's goal was to basically to find out कि what is the area that is enclosed by this curve from a particular point in the x to particular point in the x. So another particular point in x. ठीक है, मान लो मैं इस particular area पे interested हूँ. ठीक है, I'm interested to find out that what is my area enclosed by this curve from point A, from point 1 to point 2. So what Leibniz did is basically he tried to discretize. Discretize का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन है उसको छोटे छोटे अंश पे तोड़ो. ठीक है, मान लो मेरे पास एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, मुझे बड़ा सा रेक्टेंगल बनाने में डिफिकल्टी हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में तोड़ूंगा. ठीक है, देन आई विल एड अप ऑल द एरिया ऑफ द इंडिविजुअल रेक्टेंगल ताकि मुझे पूरा रेक्टेंगल का एरिया मिल जाए. राइट, सो व्हाट ही ट्राइड इज दैट, ये जो पर्टिकुलर जो रीजन आपको दिख रहा है ना, तो ही ट्राइड what he tried is basically मान लो एक कर्व है ऐसा कुछ, and I'm trying to find this area under this particular region, right? So what he tried to break this interval in form of some steps. Okay, in form of small rectangles which looks like the steps over here, right? Okay, so he break this entire region जो उसको बोला जाता है discretization. So he discretized the entire region in form of small rectangles. And he came up with an idea that what if I add all the rectangles to get to the area of the entire region, right? So if I add the area of the rectangle, and this addition of all the area of the rectangles will give me the approximate, not the exact, will give me the approximate area of the under the curve, right? But the most important idea what he came up is that जैसे जैसे मैं इस एरिया इस रेक्टेंगल का विड्थ को मैं छोटा करते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इस रेक्टेंगल का विड्थ को छोटा करते जाऊंगा, तो आई विल बी इन अ पोजीशन टू मार्क और कवर माय रीजन इन अ मच बेटर एक्यूरेसी, राइट? तो अगर मेरे पास और छोटे रेक्टेंगल्स होंगे तो आई विल बी एबल टू गेट द एरिया ऑफ द कर्व एज मच एज एक्यूरेट, सो माय एरर इज आल्सो गोइंग टू बी लेस. ठीक है, मान लो अगर मैं सिंपल एग्जांपल में समझाना चाहूँ तो मान लो मेरे पास कोई रीजन है और इस रीजन को मैं दो रेक्टेंगल्स पे तोड़ रहा हूँ, राइट? वन रेक्टेंगल इज लाइक दिस एंड अनदर रेक्टेंगल लाइक दिस, राइट? सो इस केस में मेरा जो एरर आएगा दैट इज समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस, राइट? बट अगर मैं इसको और छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में तोड़ता हूँ देन माई एरर विल बी मच लेसर when I break it into only two rectangles. ठीक है, so the number of rectangles is increased, and if you increase the number of rectangles to infinite, that is a concept in mathematics or in calculus. So if you increase the number of rectangles to infinite rectangles, then you are most accurately representing or the analytical solution of the area under the curve. क्या ये सबको समझ में आती है? हाँ या ना बता दो एक बार हाँ या ना बता दो सब. Is this clear to all of you? Is this part clear to all of you? Right. So then this particular idea came to an existence, and what he did, so in order to find the area, so area is basically nothing but summation of all the small individual rectangles. तो मान लो मैं n number of rectangles लेता हूँ, so and each of the rectangle is having some width bi. Okay, so then it is basically bi multiplied with, and at any interval of x, like let's say x, so the y coordinate or means the height of the rectangle will become x of I f of xi, right? Because I know the function is defined as y is equal to f of x, right? So at any x, the y coordinate will be the function of value at x, right? So इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ function of value of b of I, right? And if I take this summation, this is going to represent the sum of all the small rectangles, which is going to represent the area of the curve, right? पर मैंने क्या बोला यहाँ पे कि if I increase the number of rectangles towards infinity, then I'm most accurately representing curve. So therefore, if I put the limit when n tends to infinity, so if I put the limit when n tends to infinity, this is nothing but this is called as definite integral from a to b. This is, let us say, x equals to a, and let us say x equal to b. So a to b f of x dx. Okay, f of x dx. So this is the way in which definite integral is actually defined. Okay, क्या ये सबको समझ में आती है? So definite integral is nothing but it is the sum of infinite quantities. So definite integral is nothing but the sum of the infinite
quantities. Okay, is this clear to all of you? And this was the main development of the integral calculus. Now, integral calculus has been basically of two types. They are basically definite integral and indefinite integral, right? So this particular integral, where the limits of the integral are defined, this kind of integral is basically called as definite integral. So initially, we are going to start our chapter discussion with indefinite integral, and then we are going to discuss about definite integral in the upcoming sessions. Okay. So there are going to be lots and lots of questions, lots and lots of sessions. Okay. So stay tuned for that. If you haven't subscribed the channel right now, please subscribe the channel and stay tuned, and please hit on the bell icon. Okay. Is this part clear to all of you? Is this part clear to all of you? एक बार हाँ या ना बता दो. Is this part clear? Okay. I'm going through a live chat. Please tell me, is this part clear to all of you or not? टेनिसन, हेलो भाई, फंक्शंस पढ़ रहा हूँ और आप यहाँ इंटीग्रल्स करा रहे हो. देख भाई, तुझे फंक्शंस पढ़ना तो फंक्शंस पढ़ो, तुझे अगर इंटीग्रल्स पढ़ना तो इंटीग्रल्स पढ़ो, मैं इंटीग्रल्स पढ़ा रहा हूँ. कोई प्रॉब्लम? Okay, okay. Let's discuss now about the introduction about this particular chapter. Hazard. Hi Hazard. Okay, so introduction, if we talk about what is indefinite integral, so generally if I have a function, let us say I have a function phi of x, and that particular function is मैनाक साहा द कार्टून वर्ल्ड. नाम ले लिया नाम मैनाक, मैनाक साहा द कार्टून वर्ल्ड. हैजर्ड, मैं एरिया पे हूँ. अच्छा टेनिसन. ओके गुड. ओके सो मैनाक साहा, या हाय मैनाक साहा, क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको? Okay, so if I have a function, let us say I have a function phi of x, and that particular function is a continuous and differential function. Okay, and it is called the primitive or antiderivative of functions f of x. Then I will write my expression f phi dash of x is equal to f of x. Phi dash of x is equal to f of x. So what you can understand is that integrals कुछ नहीं है, बस it is like a reverse process of differentiation. Okay, so it is nothing but the reverse of differentiation. How it is a reverse of differentiation, I'm going to explain this throughout the chapter. Okay, so stay tuned for that. Okay, now let me take a simple example. If I have a function like x to the power 5 by 5, and if I differentiate this particular function, so let us say I have a function x to the power 5 by 5, and if I differentiate this particular function with respect to x, I'm going to get x to the power 4. Therefore the primitive of x to the power 4 will be called the function x to the power 5 by 5. Okay, so therefore this is basically this particular function by which I can get the reverse of differentiation is basically called as the integral or the antiderivative or the primitive of a function. Okay, so if phi be the primitive of a function and c be any constant, then differentiation with respect to x of phi x plus c will be phi dash of x, which is equal to f of x. Okay, and phi of x plus c is also the primitive of x. Now why this constant c is coming up, that is also an interesting story, because when you differentiate a constant, the result you're going to get is 0, right? So when you differentiate in constant, the result is 0. So therefore when you integrate any function, when you integrate this particular function, so that the information about the constant is not present. Okay, so that to incorporate, or when you differentiate a particular function, the constant becomes 0, so that particular information is not present. That particular information is not present when once you get the integral result, right? So what if I give a simple example? We all have studied integrals for the starting of physics. So if I give a simple example like x cube, x square, and integration of x square, the result is very simple, that is x cubed by 3, right? But the thing is, like, if I have x cubed by 3 plus 1,
and I differentiate this particular expression with respect to x, then the result is going to be x square. So therefore I can tell that the primitive x square is x cube by 3 plus 1 also, or I can say x cube by 3 plus 2 also, or I can say x cube plus 3 by 3 also, right? So मैं कुछ भी बोल सकता हूँ यहाँ पे. So that is the most important thing that you need to understand, that when I talk about primitive, it has to be a unique answer. So therefore, let us say this is some constant. Okay. So whenever I will represent my answer of indefinite integral, the result is when I integrate it indefinitely, then I will add a constant to it. Okay. And that particular value of the constant is generally determined using the initial value or the boundary value that is given in the problem. Okay. क्या ये चीज सबको समझ में आती है? क्या ये चीज सबको समझ में आती है? एक बार हाँ या ना बता दो. Denison, is it clear to all of you? Mainak, is it clear? Okay. Thus, if I have a function f of x and which possesses a primitive, then it possesses infinitely many primitives. Therefore, I have to combine that particular infinitely many primitives. That means when I integrate any result or when I integrate any function, the result which I get are nothing but they represent the family of curves. Okay, constant का value vary करते चला जाओ and definitely you're going to get family of curves, right? So therefore, they are combined all in one particular expression and they are written like phi of x plus c, where c is any constant. Okay. Also, another important note is that if I have f1 of x and f2 of x are the two antiderivatives of a particular function, if I have only one function and the antiderivative of that particular function is f1 x and f2 x on an interval a to b, then the difference between them is nothing but this, it is just a constant. Okay. So that is also very important to understand, and it's just like the understanding कि constant के basis पे उस particular functions अलग हो सकते हैं. Okay, constant के basis पे दो antiderivative अलग हो सकते हैं, but that constant has to be determined by the given condition. So unless and until कोई condition दे रखा होगा question में, सिर्फ हम बोल नहीं पाएंगे कि the antiderivative is a unique result. I have to tell the antiderivative of a function is basically nothing but a family of curves. क्या ये चीज सबको समझ में आती है? क्या ये चीज सबको clear है? Please let me know if this part is clear or not. Okay, now let us understand the properties of integrals, because we are basically going to discuss integrals, so it is very important to understand the properties of integrals, right? So if we talk about the properties of integral, the first thing that I need to understand is that integrals are just the inverse of differentiation. So differentiation of any integral, is the integrand itself. All the process of the differentiation and the integration neutralizes each other. That is very, very important. So if I differentiate any integral result, it is the same integrand again. Okay. The second property is saying that the integral of a product of a constant, and a function is equal to the product of the constant and the integral of the function. Okay. So if you have integration of c into function, or it is equal to the constant will come out of the integral. Okay. That is a simple result. And similarly, if you have the third property talks about that if you have a integral of sum of two functions, then the integral will get distributed into two summation of two different integrals. Okay. So if you have integral of f1 of x plus f2 of x, or plus or minus, it is basically integral of f1 of x plus or minus integral of f2 of x. So in general, if you can combine all these results, so k1 multiplied by f1 plus or minus k2 multiplied by f2 and so on up to any terms, then it is basically given as k1 times integral of f1 plus or minus k2 times integral of f2 plus or minus k3 times integral of f3 and so on in number of times. So it is a general form that you need to understand. So these are the three important properties of integral that you need to keep in mind. ठीक है, क्या इस चीज सबको समझ में आती है? Is this part clear to all of you? Is this part clear to all of you? Okay, now comes another important thing, that is if we have some of the standard functions, we need to remember the integral result of the some standard functions. Okay, तो वो standard functions क्या क्या है? I am going to write it down in one particular place and you have to remember those standard functions, because जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर आप इसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फंक्शंस को जनरली
मोस्टली यूज करोगे, एंड इट इज वेरी इजी टू डिराइव बिकॉज इफ यू नो द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ दैट विल बी द इंटीग्रल्स, राइट? सो मैं यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला लिखूंगा एंड यू हैव टू टेल मी द रिजल्ट, ओके? ऑल्सो आई विल ऑल्सो टेल यू द रिजल्ट एज वेल, ठीक है? So some standard results that you need to remember because you already know the differentiation results, right? So standard results, okay? Let me start with a very simple result, that is, if you have to integrate x to the power n dx, then what is the result? Now another two important things that you need to understand, that whenever we write any integral, so if you have an integral of any particular function f of x and then there is a d of x over here, right? So what are the two important concepts that you need to understand is that this f of x is the function or the height of the rectangle and d of x is basically the width of the rectangle, right? So let me write over here, it is the width of the rectangle. Okay, now which rectangle I am talking about is basically, I have already told you that whenever we are writing the integral, so it is basically nothing but the sum of the some finite area, right? So in that finite area, the finite area is basically the finite rectangles, right? So that particular finite rectangle will have a small width, and that is the width of the rectangle, and this f of x is basically the height of the rectangle, right? So this is how an integral is basically written down, okay? And this integral sign denotes the infinite summation, okay? So two important things, please try to understand, okay, clearly. Okay, so if we are given any particular function that is like x to the power n dx, the integral result of it is very simple, and you have to remember this expression is basically x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus some constant c, okay? And this result is valid for all integers except except if you have minus of 1, okay? So it is valid for all integers except minus of 1, okay? Is this part clear to all of you? Or I should say it is valid for, it is not valid only when n is not equal to minus of 1, okay? N is not equal to minus of 1. It is only not valid when n is equal to minus of 1, because if you have 1 upon x, then the result is a different result, okay? So that is something that I will tell you, okay? And the second important result to understand is that if you have an integration of dx, it is simply as x plus c, okay? The third important result is basically when you have integration of dx upon root of x, okay? Now you must have this confusion that how am I getting this result, right? अगर मैं सिंपल से चीज पूछूं, अगर व्हाट इफ यू डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, आर यू गेटिंग दिस इंटीग्रल रिजल्ट और नॉट, दैट इज हाउ दे आर डिराइव्ड, ओके? सो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, यू डेफिनेटली गोइंग टू गेट दिस इंटीग्रेंट्स, ओके? देन द डिफरेंशिएशन ऑफ dx अपॉन रूट x इज बेसिकली 2 times of root x plus c, okay? 2 times of root x plus c. The fourth result is if you have to integrate ax plus b whole to the power n dx, then the result is 1 upon a ax plus b whole to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus some constant c. And also remember, n should not be equal to minus of 1, okay? Right? And I will tell you that how this particular result has 1 upon a coming up, okay? This is very important, I will discuss about it, okay? Just for the sake of remembering the formulas, please write it down, okay? Let's move to the fifth one. The fifth one is what if you have to integrate 1 upon x dx, the result is nothing but it is basically natural log of mod of x, okay? Natural log of mod of x, okay? Then comes the expression like integration of 1 upon ax plus b dx, and the result is 1 upon a, and the result is 1 upon a natural log of mod of ax plus b, okay? Plus some constant c, right? Let's move to the seventh one. The seventh one is if you have to integrate e to the power x dx, the result is e to the power x plus some constant c, okay? Let's move to the next results. The next results are what if you have to integrate a to the power x dx, okay? You have to integrate a to the power x dx, and the result is a to the power x upon natural log of a plus some constant c. The ninth result is if you have to integrate, now we come to the trigonometric form. So if you have to integrate sine of x dx, the result is minus of cos x plus c, okay? Then we come to the result, what if you have to integrate cos of x dx is basically given as sine of x plus c. The 11th result is if you have to integrate, so I'm only discussing the standard ones right now. There are a lot of other different formulas that you will also come across in the chapter. I'm going to discuss that
as the chapter goes on. Okay, and then if we have to differentiate secant square x, right, so the result, or integrate secant square x, the result is basically tan x, right? So if we differentiate tan x, then the result is secant square x, right? Integration of cosecant square x dx, the result is minus of cot x plus c. Okay, 13th result is integration of sec x tan x dx, the result is simply secant of x plus c. Integration of cosecant x cot x dx, the result is minus of cosecant of x plus c. Okay, all right. So these are all the standard formulas that you need to remember so far as the basics is concerned. Okay, जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे फिर हम सीखेंगे द मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, इनिशियली द इंटीग्रल्स प्रॉब्लम्स that you need to solve is basically by using the standard formula. So in generally you will give some simple algebraic expression and you have to solve those integrals by using the standard formulas. ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे फिर हम we will learn about the different methods of integral solution, that is like simple integral solution like by substitution, by parts, okay, or by partial fraction. So all those things as we go on learning in the chapter, I'm going to update this particular formula sheet, and ऐसे करते करते आपके चैप्टर में एंड तक आपके पास काफी सारा फॉर्मूलास हो जाएगा और काफी सारा कॉन्सेप्ट्स आ जाएगा, काफी सारा टिप्स भी मिल जाएगा, राइट? सो along with that you are basically going to solve the questions. Okay, सहज गणित भैया 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस, सी माय कमेंट. सुमन, इट्स बेसिक, यस इट्स बेसिक, बेसिक से तो सीखना है, राइट? बेसिक से तो स्टार्ट करना है. Okay, so these are all the standard formulas that you need to understand, and we will try to proceed with the question solving with this particular standard formula. So let's start with some of the basic questions. ठीक है, तो आपके पास कुछ कुछ algebraic expressions है. Please try to solve this algebraic expression and tell me what is the integral result of this particular result. ठीक है, please try to solve this simple questions. Okay, so let's start with integrating the first result. Okay, so integration of 5x square minus 8x plus of c dx. So the result is very simple. So whenever you have an algebraic expression with plus or minus sign, I can break the algebraic expression into individual integrals. So that can be given as integral of, and 5 is a constant, so 5 will come out. So integral of x square, 5 times integral of x square minus 8 times integral of x dx plus 5 times integral of dx. Okay, then if you integrate this result, the result is 5 times of, and this integration of x square will be basically x cube by 3 minus 8 times x square by 2 plus 5 times of x plus some constant c. Okay, so this is going to be the integration of the first answer. क्या सबको समझ में आती है बात? क्या सबको समझ में आती है बात? Is this part clear to all of you? Is this part clear to all of you? Please let me know. क्या ये सबको समझ में आती है? Suman, is this part clear? I know it's basics, but we have to start with the basics, right? क्योंकि इंटीग्रल्स मैं काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, एंड आई एम गोइंग टू कवर एवरी एडवांस क्वेश्चंस. ओके, सो डोंट वरी, आपको लग रहा होगा कि इंटीग्रल्स अभी आसान चल रहा है. जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ती जाएगी, राइट, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ इंटीग्रल्स. ओके, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्लीज़ दबा दो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जब हम लाइव आते हैं एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रल्स. ओके, ठीक है, अगर आप एक बार अच्छे से इंटीग्रल्स को बेसिक से सीख लेते हो ना, डेफिनेटली आपको कभी भी इंटीग्रल्स के कोई भी क्वेश्चंस करने में, कोई थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है. ओके, so that is my motto behind discussing the integrals in this particular basic manner. ठीक है, okay, please solve the other 9 questions. Please solve the other 9 questions and tell me the result. Please solve the other 9 questions and tell me the results. Okay, so if we go on solving the second problem, the result is very simple. So you can write this result as, answer to the second problem will be minus of 6x to the power 4 by 4 plus 9 of 9 to the power x to the power 3 by 3 plus 4 times of x square by 2 minus 3x plus some constant c. Okay, and if we look at the third problem, so solution of third problem is very simple. It is basically x to the power 3 by 2 divided by or multiplied by 2 by 3 plus 2 times of x square by 2, okay, plus 3 times of x plus constant xc. Okay, let's solve the fourth one. The fourth one is 8 natural log of mod of x
minus 5 times of x to the power minus 2, and if you just integrate x to the power minus 2, it is 1 minus will come up, it is 1 upon x, okay, and then plus and minus will come up, this will be basically like 6 by x square, and there will be 1 upon 2 over here, right? Yes, correct, right? So this, and then plus constant c, don't forget to write that. Okay, please tell me, are you understanding this particular part or not? Please let me know. क्या सबको समझ में आती है ये बात? Okay, so please try to solve this remaining 5 questions. Okay, please try to solve the remaining 6 questions. Okay, and let me know the answer in the comments. Okay, let me know the answer in the comments. Please solve this 6 more questions and let me know the answer in the comment. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक लाइन का सोल्यूशन है. ओके, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन को करना है, और आपको फॉर्मूलाज का भी याद हो जाएगा. ठीक है, करते करते फॉर्मूलाज भी आदत हो जाएगी, राइट? Okay, okay, so and this are the next set of questions that I need and want you to solve these questions. Okay, आप एक बार ये जो बाकी जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, राइट, 11 से लेकर 22, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज होमवर्क. ओके, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज होमवर्क एंड लेट मी नो द वंस यू आर डन विद दिस क्वेश्चन. ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट मी नो वंस यू आर डन विद दिस क्वेश्चन. ओके, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर सॉल्यूशन है, जस्ट फॉर्मूला को याद करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है, राइट, सो दैट यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड यू नो हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूलाज टू डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस ओवर हियर. ओके, क्या ये सबको समझ में आती है? क्या ये चीज सबको समझ में आती है? ओके, now with this I actually wanted to discuss another very important thing, that is definite integral, or how do we solve definite integral, right? Once we are learning about indefinite integral, it is very very important that what is definite integrals are, right? So initially मैं जब definite integral define कर रहा था, तो I have put as some constant as limit, right, a to b, and then I said integral of function f of x dx within the limit a to b. तो इसका मतलब क्या होता है? If I say the integration of function f of x dx is basically capital F of x plus some constant. So this thing means that capital X of b plus some constant minus capital F of a plus some constant, right? जिस पे आपका जो constant का वैल्यू है वो तो कट जाएगा, and then you are going to get the result simply as capital F of b minus capital F of a. So whatever the integral or whatever the primitive is, you just need to put the value of the upper limit minus the value of the lower limit. ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज करते हो, then definitely you are going to get the answer for this definite integral. So please try to solve these questions as just a simple homework practice. Okay, please try to solve this question as a simple homework practice. And one more set of important question that I want to give all of you is that this particular set of question, which is very very important. Okay, this is an important set of question, and this will help you to understand that what is the interval of the function in which we are doing the integration. Okay, वो जो function का range कौन सा लेना चाहिए whilst we are doing the integral, right? So function will be given as piecewise function and the integral will be involved the entire region. Okay, जिस particular region पे आप integrate कर रहे हो, and then within the limit the function definitely changes, so you have to basically break the function in two parts and then you have to solve it. So this is a simple homework problem that I want all of you to solve it and let me know the answer you're getting in the comments. Okay, and we will start our next class discussing with this particular part only. Okay, so our next class will start from this particular page. Okay, so next class will start from this particular page, so stay tuned for the next class because we are going to have a next class very soon on the topic of integral part 2. Okay, and with the next class we are going to practice more and more questions. Okay, so stay tuned for the next class, that is our part 2. Okay, so if you are new to this particular channel, please hit the bell icon and please subscribe to the channel so that you don't miss out any upcoming notification about the live classes and so. Okay, अगर आप क्लास 11th और 12th में प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली दिस लेक्चर्स आर गोइंग टू बी गोल्ड माइन फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, क्योंकि हम इस लेक्चर के साथ साथ सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व मॉक टेस्ट एज वेल. ओके, सो लाइव मॉक टेस्ट सॉल्यूशन भी होंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉट्स और लॉट्स फॉर प्रैक्टिस सीरीज और टेस्ट सीरीज. ओके, जिससे आपका प्रैक्टिस काफी अच्छे से बन जाएगा एंड यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर वेरी नाइसली फॉर एडवांस. ओके, ईशांत कम्बोज डन, वेरी गुड. BR edit, I don't know how to solve it, please make a discussion video. Sure, BR edit, we are going to start our next class with this particular thing only. Okay, हम यहीं से स्टार्ट करने वाले को एग्जाम सीरीज को. ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास पे. ठीक है,
प्लीज स्टे ट्यून फॉर इट। ओके, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लास आएगा ना, उस पर हम यही चीज डिस्कस करेंगे। ओके ओके, बियर एडिट्स, बियर एडिट, इज दिस क्लियर? I will definitely solve these questions. Okay, bear it. Please subscribe to the channel and stay tuned for these sessions. Okay. Okay. Is this clear for all of you? Please let me know yes or no. एक बार हाँ या ना बता दो, कुछ भी। अगर सबको इस सीरीज समझ में आती है तो डेफिनेटली कमेंट। ओके, एंड डेफिनेटली स्प्रेड दिस वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स और with whom you think that they basically need this particular lectures, क्योंकि ये फ्री पे पढ़ाया जा रहा है, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वेरी impactful content, especially for the upcoming mains and advanced students as well. Okay, be ready. Thank you for your contribution. Okay, और क्लासेस में रेगुलर आने की कोशिश करो, ताकि आपको भी रेगुलरली कंटेंट समझ में आए, क्योंकि हम लोग रेगुलर लाइव क्लासेस ले रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट मैथ्स, इट्स ऑल्सो अबाउट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी भी जल्दी आने वाला है इस चैनल पे। ओके, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सेशन में कोई भी क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली पुट द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द लाइव क्लास इज ओवर। सो विद दिस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड ऑल द बेस्ट।